Start. Petitioner has invoked the writ jurisdiction of this court assailing the orders dated 16th November 2010 and 30th March 2007 passed by respondents number 1, 2 and 3 respectively, arising out of the mutation proceedings. Stop. Petitioner is claiming himself natural heir of Mohinder Singh being his son, while private respondents are claiming inheritance on the basis of a less registered will. Stop. Undisputedly, as on day no land revenue is assessed or is being recovered in the state of Punjab and Haryana. Stop. Learned counsel for the petitioner has stated that civil suit between the parties is already pending involving the question of inheritance of the estate of Mohinder Singh. Stop. Privy Council in Nirman Singh and others versus Thakur Lal Rudra Pratap Narayan Singh and other AIR 1926 has held as under. Stop. It is an error to suppose that the proceedings for the mutation of names are judicial proceedings in which the title to and the proprietary rights in immovable property are determined. Stop. They are nothing of the kind, as has been pointed out times innumerable by the judicial committee. Stop. They are much more in the nature of fiscal inquiries instituted in the interest of the state for the purpose of ascertaining which of the several claimants for the occupation of certain denominations of immovable property may be put into occupation of it with greater confidence that the revenue for it will pay. Stop. Having perused judgments cited herein before and section 36 of the Punjab Land Revenue Act, I have no hesitation to hold that mutation proceedings are summary proceedings in the nature of fiscal inquiries instituted in the interest of the state for the purpose of recovery of the land revenue and to update the revenue record. Stop. Any observations, finding, or decision in the mutation proceeding shall not be res judicata and shall have no adverse effect in a regular suit involving questions of title and possession. Stop. Learned financial commissioner in the case of Jasbir Kaur Supra was right in observing that revenue officer is not supposed to go into the indicate questions of law facts about the inheritance of the estate of the deceased. Stop. In the case of Harjeet Kaur Supra. Stop. If civil suit involving question of title is already pending, then sanctioning of the mutation should be kept in abeyance in view of the division bench judgment of this court in the case of Jagtar Singh Supra. Stop. If mutation is uncontested, one then revenue officer is duty bound to carry out the mutation at the
earliest and should not keep it pending for long period stop. However, if mutation is contested and disputed by the parties claiming their respective titles, revenue officer should direct the parties to approach the civil code to establish their respective titles, and meanwhile revenue officer should not proceed with the mutation and should wait for the outcome of the decision in the civil suit stop. Revenue officer is duty bound to carry out mutation and entries in the revenue record as per the ultimate decision in the civil suit between the parties. Stop. It has come to the notice of this court that even if civil suit involving question of title and inheritance is pending. Authorities are proceeding with the mutation cases and litigants are being advised and misled to file appeals and revisions before the higher revenue authorities while mutation ordered by the revenue authorities shall be of no avail in view of the pendency of the civil suit, and ultimately mutation is to be carried out as per the ultimate decision in the pending civil suit. Stop. This is the classical example of multiplicity of the litigation. Stop. Nowadays, several measures are being taken to provide low cost and speedy justice to the litigant. Stop. This court is pained to observe that parties are advised and misled to contest mutation before different revenue authorities up to the level of financial commissioner and this court and thereafter to approach civil court to get their title decided. Stop. It not only amounts to multiplicity of the litigation but also results in financial loss and loss of mental peace to the litigants. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शंस आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा।
सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शंस आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है, ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।